Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And today we are going to look at application of Bollinger Bands on Bitcoin. कभी सोचा आपने Bollinger Bands की टेक्निक साथ में RSI जो हम वीडियोस बना रहे सीरीज ऑन YouTube आप देख पा रहे होंगे. That is on Nifty, Bank Nifty that I have explained. But let us try and expand that search on Bitcoin. And I've been doing that, and it is simply amazing the way this strategy works even on a Bitcoin. And खास करके the best part about that is that if you have an option strategy possible to deploy when you have on a Bitcoin, that's amazing. And much more if you have an options which are expiring daily. So निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, आप वीकली वेट करते हो कि यार एक्सपायरी डे आएगा, उसके पहले दिन या एक्सपायरी डे के दिन आप एक ट्रेड लोगे. एंड देन if you are selling options, you try to do that, or maybe buying out of the money option, डबल करना है पैसा, ये सब चक्कर में आप करते हो. But if you have an asset where the options are expiring on daily basis or every other day, don't you think that will be a classic opportunity for us to buy or sell options and then form that strategy around that area? So let me quickly take you to the platform of Delta Exchange. If you have seen this earlier also, when we were doing it, you might have seen this platform earlier on where I've explained about options on Bitcoin, but I'll again re-explain it to you how to go about it, how to look at it, and how to look at the charts from the Bollinger Bands perspective, because वो series हमारा चल रहा है. So very quickly, let me just share across my screen here. And before we move on, I would like to just we are SEBI registered research analyst. Whatever I am doing here is purely from learning and educational perspective. So keep that in mind. And I'm not recommending you to buy or sell anything. I'm simply showing you यार ये मेथड चलता है बिटकॉइन के ऊपर भी on the options and on the spot chart. How do we go about it? So यहाँ से आगे बढ़ते. Let me now very quickly go on the platform that I was talking about. Just give me a second. On that platform, I'll just open up the platform which is of Delta Exchange. वहां पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कि यार ऑप्शंस है और हम ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट ऑन डेल्टा एक्सचेंज. जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को करते हैं उसी तरीके से. जस्ट वेरी क्विकली बताता हूँ इन केस यहाँ पर आप डिपॉजिट और बाय है ऑप्शन. सो यू हैव दी how do you go about it is यहाँ पर जाके on meta select the amount and you can then buy the Bitcoin. यहाँ पर you are buying USDT. USDT is a US dollar token जहाँ पर it is tracking US dollar very closely. So it's not US dollar per se, but it's a coin which is tracking US dollar. So essentially this USDT will be at a little premium compared to US dollar, and you can directly go and buy your USDT from here. Once you have bought your USDT, you have the option to convert that USDT into Bitcoins. You can convert into Ethereum. वो हो गया, आपने बाय करके बिटकॉइन रख दिया. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. हम करना है, हमें ट्रेड करना है. So if you want to trade this, how do we go about it is what I am trying to show you now. यहाँ पर if you go to the markets section, I'll just close this. हाँ, market section में आने के बाद में you have options, futures, spot, everything is there. The best part is that in the options you have the entire option chain. You know, that's the beauty of it. And यहाँ पर ऊपर आप अगर scroll करके देखेंगे तो you have 6th July का contract, you have 7th July, you have 8th July. So यार हर दिन अभी 9, 10, 11 July का नहीं है, because maybe the weekend or it will open up once one more expiry happens. So yeah, that's the best part about it. You have current 3 days का expiry options, and then you have weekly also again here. So यहाँ पर you can go and trade 6th July. So अगर आप 6th July देख रहे हैं, 5th July अभी है, तो 6th July के ऊपर आप options select कर सकते हैं. Now ये कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए तो यार पहले चार्ट देखना पड़ेगा ना हमें. वी नीड टू सी what is the chart suggesting and how it is looking like on this on the basis of technical analysis. So I can go here, I can go to the markets. You can even see the options chart. You can select the spot price here, and आपको यहाँ पर पूरा spot price आ गया. I clicked on US
DT, BTC, USDT एंड डायरेक्टली यहाँ पर ये चार्ट बिटकॉइन का प्लॉट होके सामने आ गया एंड दैट्स कन्वीनियंट एंड यू नो इफ दिस इज इंटीग्रेटेड विद ट्रेडिंग व्यू सो बहुत कन्वीनियंट लगता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे आई एम गोइंग टू रिमूव द वॉल्यूम फ्रॉम हियर, वॉल्यूम्स नहीं चाहिए मुझे, simple candlestick technique. If you have seen my earlier videos on YouTube on how to look at Bollinger Bands with 3 candle rules plus Bollinger Bands with RSI, so उसी का extension है. So अगर नहीं देखा तो ensure you see those videos also. यहाँ पर अगर हम देखेंगे we can clearly see basis of the candlestick profile, the current candle high is below the prior candle high एंड द लो इज बिलो द प्रायर कैंडल लो एज ऑफ नाउ। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है यार प्रेशर बना हुआ है मार्केट में एंड यहाँ मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ है 31,400 के आसपास से। दैट इज व्हाट आई कैन सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट बिटकॉइन है इट्स अ डिफरेंट एनिमल, रिमेंबर दैट। यहाँ पर ऑप्शंस का आईवी यू गेट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, जहां पर हम 13-14% के आसपास आईवी पे ट्रेड कर रहे हैं, 12% के आसपास निफ्टी पे, इतने कम आईवी पे। यहाँ पर आईवी मतलब implied volatility is nearly 50%. So the risk is high, but if you trade correctly, the reward is also high. So everything goes in hand with risk and reward. Remember to trade with a strict stop loss, whether you are buying option or selling options. Stop loss के बिना काम नहीं करना है. So you have to ensure you are trading with a very strict stop loss on and then you need to apply those stop losses and trade. So यहाँ पे अगर 1 hourly chart पे जाते हैं, let us apply Bollinger Bands first. So I will come here and I'll directly go on the indicators and I'll apply Bollinger Bands. Once I have applied Bollinger Bands, I know where is the support. So daily पे support mid band पे आता है, which is around 20,500 के आसपास. That's where the support is there on the mid band. Now if I go on 1 hourly chart, and if I check the overall movement on a 1 hour chart, I will come to know here क्या move हो रहा है Bitcoin में. Is it making sense to trade here, or is it making sense to wait and sell options? Because we don't really want to always buy options. We might also want to at times sell options. तो वो देखते हैं हम. ये आ गया हमारा 1 hour चार्ट, थोड़ा स्लो था बट 1 hour के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड आप देख पा रहे बिटकॉइन का इज ऑन द डाउन साइड. इस कैंडल ने, you remember the Bollinger Bands technique that we have looked at, this candle closed below the band. What is the strategy, guys? I am now going to explain you strategy in a very simple way. Please understand what is the strategy. हमारा strategy क्या है? Prices are moving between the mid and the lower band, which means फिलहाल short term के लिए, short term I am talking about, is bearish. Okay, that's the trend right now that we can make out, and it is giving a breakdown below the lower end of the band, and the bands were contracting. Now the bands are expanding on the downside and the upside. So this band will expand and this is how it goes, which means the overall view for अगर मुझे 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए भी ट्रेड निकालना है तो bearish view निकालना है. So my strategy would have been to sell. Right now I'm trading options since the daily trend is upside. ठीक है, the hourly trend is downside. Can I say it's a conflict? Because daily trend ऊपर का है, hourly नीचे का है, so there is some conflict. In this kind of scenario, options become the best instrument that I can make use of. In this case, I will be looking at options and seeing selling call option. If I am looking at a selling opportunity, the reason I'm looking for a selling call option is because prices broke below the lower end of the band and the next candle taken out. The trend is bearish, but the overall bigger trend is bullish. So I can sell call options looking at the overall movement of the market. Now, right now it is at 30,385. You need to understand the ATR, मतलब on an average basis यार कितना मूव होता है ये specific asset, मतलब hourly basis पे कितना मूव होता है, those things. So you can put an indicator which is known as ATR. ATR indicator से हमें पता चलता है what is on an average basis this is moving.
सो ऑन एन आवरली बेसिस, एक घंटे में, रिमेंबर दैट इन 1 hour बिटकॉइन मूव्स एवरेज 102 पॉइंट्स. Wow, that's a huge movement, right? Unlike Bank Nifty और निफ्टी ऑन डेली बेसिस, अब ये तो फिर भी कम है. इनफैक्ट एक घंटे में मैंने देखा है बिटकॉइन 500 पॉइंट भी ऐसे ही मूव हो जाता है, ऐसे ही, वेरी इजीली. सो इफ आई हैव टू सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस, लेट अस लुक एट द डेली चार्ट एंड सी कि डेली चार्ट के ऊपर व्हाट इज द ओवरऑल range of the market on the daily basis. So daily chart will help us to understand the daily range of the market. So on the daily basis, the movement is 838 points, जिसमें तो ये कंसोलिडेट हो रहा है. तो मतलब 800 से 900 पॉइंट का मूवमेंट बिटकॉइन पे एवरेज डेली बेसिस पे होता है. तो अगर मुझे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, आई माइट वांट टू सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस विच इज 1000 पॉइंट अवे, इवन इफ इट इज 1 day टू एक्सपायरी, बिकॉज मूवमेंट बहुत वायलेंट आ सकता है. सो नाउ आई विल गो एंड चेक माई ऑप्शन टेबल, मतलब ऑप्शन स्क्रीन पे जाएंगे. I will come here and let me just clear off all the screen. And now I will see कि यार बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था हम जब देख रहे थे. Let's just check again the Bitcoin price. This is futures. So Bitcoin is around 30,300 के आसपास. So मतलब 30,300 में है तो क्या 31,500 के आसपास में हमें कोई ऑप्शंस कॉल मिल रहा है क्या? और थोड़ा और लीवे हमें देना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट अगर हमारे अगेंस्ट मूव गया तो हमारा ऑप्शंस का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए. So we need to select a little far away strike price. So I might go to options data here now and see if there is, and 6th July select कर रखा है 31,000. फिलहाल मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ क्योंकि नीचे का ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में, ऊपर का ट्रेंड है लॉन्ग मीडियम टर्म में, तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए मैं सेलिंग ऑप्शन की प्रीफर कर रहा हूँ, बाइंग नहीं. एंड इफ यू लुकिंग एट दिस 31,500 अगर मैं देखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हम देख सकते हैं ये बिड और आस्क है. यहां पर आप अगर देख रहे तो एक मार्क करके क्वांटिटी होती है, मार्क मतलब बिड और आस्क के बीच का लेवल. तो 31,500 पे 500 का स्ट्राइक नहीं है, 31,600 का स्ट्राइक है. वहां पर अगर हम देखेंगे तो बिड और आस्क का लेवल यहाँ पर हमें दिख रहा है, 31,800 का स्ट्राइक है, 32,000 पे 11 और 16 का बीड और आस्क का स्प्रेड है. सो यू कैन सिलेक्ट समवेयर अराउंड आईवीज कितना है. सो मार्क यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो मार्क का आईवी आपको मिल जाएगा अराउंड 55 है. मतलब सोचो 55 के इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है. और 32,000 का लेवल पे अगर हम देखेंगे, आई मार्क वैल्यू इज the middle value, you can say a median kind of a thing, 11 और 17 का bid ask है. So यहाँ पर जाके आप ये specific strike के option को sell कर सकते हैं. Now this is $10, right? But you don't really have to trade entire Bitcoin. $10 बहुत कम हो जाता है. So we might look forward for something like 31,600 का strike price. 31,600 के स्ट्राइक प्राइस का आईवी अराउंड 48.80 है, तो ओके है. मैंने आईवी को 80 पे भी देखा है, यू नो दैट्स हाउ वायलेंट और फास्ट एट टाइम्स इट बिकम्स. सो यहाँ पर वंस यू गो टू द सेल साइड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यहाँ पर क्वांटिटी हम डॉलर के टर्म्स में डाल सकते हैं. एंड यहाँ पर ऑप्शंस में देयर इज 100 टाइम्स लीवरेज आल्सो दैट वी आर गेटिंग. So if I put 10,000 US dollars, मतलब मैंने खाली $100 का रिस्क लिया. Okay, are you able to understand that? So I can put a 10,000 US dollar and the value that I'm going to place a sell order is around 23 के आसपास का यहाँ पे, which is the mark which we see 23 या 22.5, and then we can sell this option. So once we do that, it gets triggered and we can directly go to, यहाँ पर मैंने डाल दिया, you will see all the things. So the estimated premium to be received, मतलब अगर ये क्लोज हो जाता है तो यार मेरे पास कितना पैसा बनेगा. एक दिन में मेरे पास में $7.54 आएगा. एंड आपने कितना पैसा दिया वो भी सोचो. यू हैव ओनली पेड 10, you have paid $100.
तो मतलब 7.5% का रिटर्न 1 डे में बन रहा है। आई एम नॉट सेइंग ये बनेगा, जरूरी नहीं है दोस्तों, रिस्क भी है। आई एम अगेन मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट देयर इज रिस्क ऑल्सो। सो आई एम बाइंग अराउंड 328 कॉन्ट्रैक्ट, डजंट मीन 328 बिटकॉइन लिया। 328 कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज 1000 ऑफ 320। सो 1/1000 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो वो बनता है। सो अल्टीमेटली $100 मेरे को लग रहा है, $100 पे $10,000 का मार्जिन मिल रहा है। देखिए 100 टाइम्स है, सो मैंने $100 दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑन दैट $100 10,000 का मार्जिन मेरे को मिल पा रहा है, बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 100 है एंड 7.54 का यील्ड है, विच मीन्स एक दिन में 7.54% रिटर्न बनेगा अगर बिटकॉइन एक्सपायर होता है 31,600 के नीचे। बट am I going to wait until that happen? No. I might want to place a stop loss and then get out of this as soon as I am seeing some reversal signs, and accordingly you can trade. So ये decision हमने कैसे बनाया? So I'm just showing it to you across again. I'm not placing the order right now. I'm just showing you decision बना कैसे हमारा. We went to the futures market here. We went to the markets. We looked at Bitcoin, and after looking at the Bitcoin spot price, we decided यार Bitcoin का overall जो trend है वो bearish है short term में. And then we decided that okay, it is currently around these levels, and then we went to the option chain. We applied Bollinger Bands here. We saw a breakdown on Bollinger Bands, and it looks like going against the trend, so I'm going to be a little careful, and that's how we trade this specific asset. है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? सो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। In case you want to know more about this, you will find the link of this in my description on YouTube. You can see the link, and you can then go and check that out, and accordingly you can understand and apply this technique. So comment करिए, क्या आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं, या क्या लग रहा है आपको? वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो you will be able to you will be able to get onto Delta Exchange. So is it possible to trade there and do this something? Experiment करो, do not just leverage too much. It's very important. होता क्या है, हम बिना समझे बिना सोचे बहुत ज्यादा leverage करते हैं. Don't do that. So that's how it is, and that's how I am looking at Bitcoin, the basis of opportunity, and you can trade basis of that.